फार्मासिस्ट क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। अब क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है क्या, किसके अंडर आता है, क्या करता है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती चलूं। क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल सेम नहीं है। ये एक क्वालिटी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट departments. Quality control is an entirely different department and quality assurance is an entirely different department. Quality control, as the name depicts, tells you that it controls the quality, whatever the products are being manufactured in the company. They keep a check on it, they test it, they verify it, and they give a green signal if the same can be manufactured or the same can be sent to the market or not. On the other hand, quality assurance, जिस तरीके से नाम बता रहा है, it tells you that it assures the quality. The name itself tells you that it's not about testing, it's not about what QC does. QC के अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी भी मिलेगा, लैब टेस्टिंग भी मिलेगी, वैलिडेशन भी मिलेगा, बट आपको क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर entirely different prospect मिलेगा आपको. Most of the work is documentation. So quality assurance का बहुत important role है यहाँ पर. हम लोगों को especially being a pharmacist we're being told कि यार क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, यार इसके अंदर तो स्कोप नहीं है. प्लीज, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके if you are associated with this department and you're working in it, आपको मैं इतना बताते चलूँ कि जो प्लांट डायरेक्टर्स आज मेजॉरिटी कंपनीज में टॉप 10 टॉप 20 से बैठे हैं, वो सारे क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं. क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन के लोग हैं जिनको मौका मिलता है प्लांट डायरेक्टर्स बनने का. सो नाउ यू कैन सी कि प्लांट डायरेक्टर्स का क्या स्कोप है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है. Other than that, quality assurance plays a very vital role with respect to documentations. इनकी क्लियरेंस के बगैर कोई प्रोडक्ट कंपनी से बाहर नहीं जाता. सो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस डिपार्टमेंट की किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर. Moving on, one of the major the departments that we have in pharmaceutical companies is research and development. अब जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपने बताया कि नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरे नाम से है, विच इज NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या PD भी कहा जाता है इसको, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये डिपार्टमेंट क्या करता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंस वी आर जेनेरिक इंडस्ट्री, एक जेनेरिक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जिस भी प्रोडक्ट को पहली बार पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रही है वो क्वालिटी हो उसकी, वो सेफ हो और वो एफिकेशियस हो. ठीक है. सो ये 3 वर्ड आपने इवन फार्मेसी में भी बहुत बार सुने होंगे, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी. Quality, safety, and efficacy is the uttermost important thing for a pharmacist to verify in a pharmaceutical industry, in a pharmaceutical company. Being a pharmacist, जब हम डिग्री लेते हैं तो हम ओथ में ये जरूर बात करते हैं कि हम we will talk about quality, we will talk about safety, we will talk about efficacy. But जिस तरीके से हम oath लेते हैं, it is mandatory for all of us to follow that oath. And being a pharmacist, being a healthcare professional, ये ना सिर्फ हमारी जॉब का पार्ट होता है, बट हमारी एथिक्स का पार्ट भी बन जाता है. सो अदर देन दैट, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इनका काम होता है पहली बार मॉलिक्यूल को डेवलप करना इन पाकिस्तान और इन द कंपनी. अच्छा, इधर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं थोड़ी सी आपको अभी उनको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, सो दैट जब मैं इनको यूज़ करूँ तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं और कहाँ पर यूज़ होती हैं. सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम जेनेरिक इंडस्ट्री हैं, but at the same time जेनेरिक भी further divided है into 2 different categories. One is NCE. NCE क्या होता है? न्यू केमिकल एंटिटीज. अब न्यू केमिकल एंटिटीज क्या हैं? ये वो एंटिटीज हैं जो कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई हैं, पहली बार पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर हुई हैं, पहली बार पाकिस्तान के अंदर आई हैं. इनको हम NCEs कहते हैं.
एनसीईज का कतन मतलब नहीं है कि वो आउट ऑफ पाकिस्तान भी एनसीईज होंगी। पाकिस्तान के अंदर वो अगर आई है पहली बार तो वो एनसीईज कहलाती हैं, और इन्हीं एनसीईज को जब कोई छठी सातवीं आठवीं बार बनाता है तो उनको मीटूज कहा जाता है। मीटूज वो हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉट नेसेसरीली दैट दे आर मार्केटेड बट दे आर रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है पहले से तो आप जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल फाइल करेंगे वो मीटू कहलाएगा। सेम मॉलिक्यूल, सेम स्ट्रेंथ, सेम डोजेज फॉर्म में अगर आप फाइल करेंगे तो वो मीटू कहलाएगा। ठीक है जी। सो ये दो टर्मिनोलॉजीज आप प्लीज याद रखिएगा, मीटू का और एनसीई का। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि एनपीटी क्या करता है। एनपीटी का डिपार्टमेंट बेसिकली न्यू मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब वो एनसीई भी हो सकता है और वो मीटू भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम ट्रायल बैचेस को या पायलट बैचेस को जो बनाते हैं इन इन टर्म्स ऑफ चेकिंग इफ द प्रोडक्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी लगाना, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करना लैब स्केल के ऊपर, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता है। Very fruitful department, very essential department for a company. You will learn a lot from this department. If nobody here knew about this department, let me tell you, you have a huge scope in this department. So अगर आपका इंटरेस्ट है towards lab testing, towards creating new molecules, to explore in the department, to explore new molecules or to explore new formulations, this is the right department for you. All right. Moving further, we have production department. So NPD जो भी testing trial batches बनाता है, definitely once वो जब register हो जाती हैं, so the next thing that comes is to produce that product on large scale for commercialization. अब commercialization के लिए जो large batches बनते हैं, जो commercial batches जिनको कहा जाता है, वो प्रोडक्शन बनाता है। अब प्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ये सेक्शंस डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी के उनके पास कितने सेक्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर सिर्फ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होंगी, बहुत सारी कंपनीज है जो इंजेक्टेबल्स बनाती होंगी, बहुत सारी हैं जिनके अंदर पास इससे ज़्यादा सेक्शंस अवेलेबल होंगे। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक कंपनी के पास 10 या 11 सेक्शंस हैं तो उनको एटलीस्ट 4 to 5 फार्मासिस्ट चाहिए एक डिपार्टमेंट के अंदर, यानी प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर। ये डिपार्टमेंट्स इनको चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू रन देयर डे टू डे प्रोसेसेस। सो अगर मैं बात करती हूँ इन डिपार्टमेंट्स की और मैं आप बताती हूँ प्रोडक्शन का, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्रोडक्शन जो है वो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट टाइम and give you the batches, what will you be selling or what will you be marketing? All right. Acha, all right. Moving on, we have discussed the departments that in which pharmacists work in pharmaceutical company. इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे प्लांट के ऊपर। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, आईटी का डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, बट ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको मोस्टली फार्मासिस्ट नहीं मिलेंगे। मूविंग ऑन टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छा और वाइड स्कोप है उन डिपार्टमेंट्स का, जिसके अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स आता है, बिजनेस डेवलपमेंट आता है, मेडिकल अफेयर्स आता है, फार्माकोविजिलेंस आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट आता है। ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं फार्मासिस्ट को हायर करना। सो ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर अ फार्मासिस्ट ऑन अ फार्मासिस्ट पर्सपेक्टिव कि आप लोगों को पता हो। अब जो प्लांट पे डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या काम है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स की। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यूज दे रहे होते हैं एज रिक्रूटर्स, तो the one of the basic questions that we ask is what do you know about the department that you are here to interview for. So बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेशंस देते हैं जो कि वो गूगल के थ्रू उनको पता चलती हैं या उन्होंने बुक्स में पढ़ी होती हैं।
आपको मैं इतना बता दूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझना, बट जो भी हमने आज तक पढ़ा है फार्मेसी के अंदर, शायद उसका 30 to 40% है जो कि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। Because pharmaceutical industry is a very dynamic industry. Day by day rules and regulations change होते हैं, day by day processes change होते हैं. We try to modify our processes, we try to enhance and develop ourselves for a better future. So हम जो कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं वो पुराने कोर्सेज होते हैं, वो डे टू डे अपडेटेड नहीं होते हैं, तो वो उस एस्पेक्ट से शायद आपको आपकी थ्योरी जो आप पढ़ के आए हैं फार्मडी के अंदर, वो आपको उतनी हेल्प ना कर सके जितनी कि आपको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सो एज अ रिक्रूटर हमारा जो फर्स्ट थिंग दैट वी सी is the determination of the student, कि वो कितना determined है. We don't expect you to know the right definition, or we do not expect you to know the right information about the department, but we do want to see the right attitude for the job. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक माइंडसेट लेकर आते हैं कि हम सिर्फ पैसा बनाएंगे और इट विल बी अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ जॉब. Please ऐसा नहीं है. Being determined in your job requires a lot of hard work. It requires a lot of backfires. बहुत सारी चीजें आपको you'll think कि यार अभी जॉब नहीं मिल रही है, 6 महीने 8 महीने से घर पे बैठे हैं, तो यार करियर नहीं बनेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डिसहार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना है. ये चीजें बहुत पेटी हैं. The day you will find a job and the day you'll start working, you look back at this time and you'll be like, यार वो टाइम अच्छा था, फारिग बैठे रहते थे, कोई काम नहीं था, क्योंकि जॉब की लाइफ बहुत टफ होती है. ये बात आप लोग माइंड से निकाल दें कि ये वक्त जो आप इस वक्त घर पे स्पेंड कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ स्पेंड कर रहे हैं, माशाल्लाह से रमज़ान है, इबादत में गुजार रहे हैं ये सारा टाइम, तो ये टाइम ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. और आई होप कि आप लोग इस टाइम को भी अच्छे से अवेल कर रहे होंगे. ऑलराइट, मूविंग बैक टू द डिपार्टमेंट्स. रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रही थी. रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक बहुत क्रूशियल रोल है टू गेट द राइट registrations of the products, to get the job done right. So it's very important for us to follow the rules and regulations. अच्छा, regulatory department का सिर्फ काम registration का नहीं है. It is far beyond just getting the products registered. So regulatory affairs department makes sure that the company follows all the rules and regulations that are being jot down by DRAP, Drug Regulatory Authority of Pakistan. जिस तरीके से हमारे पास हर काम के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, बट ऑल थेरेप्यूटिक गुड्स, सारे थेरेप्यूटिक गुड्स के लिए आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. तो थेरेप्यूटिक गुड्स क्या है? थेरेप्यूटिक गुड्स आर नॉट जस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दीज आर द मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके पास होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. इन सब को ड्रैप रेगुलेट करता है. ठीक है जी. सो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो दे मेक श्योर कि ड्रैप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहा है वो कंपनीज फॉलो कर रही हैं. They get the registration. As I was saying, we were talking about business development department. Business development department plays a very vital role in any pharmaceutical company, especially in local firms, because business development department, as the name indicates, tells you that they bring new businesses to the company, and they're the ones who proposes the new businesses to the company. इसके अलावा वी हैव मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, वी हैव फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट. मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट क्या करता है? मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम होता है टू ब्रिंग द राइट मेडिकल लिटरेचर एंड टू ब्रिंग द राइट मेडिकल नॉलेज टू द कंपनीज in order to have the products rightly available in the market. Pharmacovigilance department is one of the divisions of regulatory affairs and medical affairs department.
Pakistan के अंदर pharmacovigilance has recently took a turn in 2017, and DRAP has been working very vigilantly with respect to this department. So, with our courses with respect to these departments, we'll be giving you greater insights, and we'll be providing you with the detailed knowledges with respect to these departments in our courses. And I would be happy now. Now, I'd be happy to take your questions in the chat box if there are any from your end, so that I can answer as the best to the best of my knowledge right now. So the chat box is open for everybody. Please give your insight with respect to this session, and you can ask any question you would want to with respect to pharmaceutical companies.